الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدر الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Respected elders, brothers, friends, young ones, ladies, first of all, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for Allah's name of blessing. May Allah give us tawfiq to do proper shukr. May Allah accept our humble efforts, be pleased with us. I would like to thank Mufti Ahmad Sahab, Maulana Abdullah Sahab for organizing the program, calling me over. May Allah reward them for their humble. May Allah accept their khidmat. May Allah be pleased with them. Amen. Then I would like to thank you all for coming down, taking your time out. The time we spend in the house of Allah subhanahu wa ta'ala is the most precious time. Because the house of Allah is ahabbul biladi ilallah, the most beloved spot on the face of the earth to Allah subhanahu wa ta'ala. So you are sitting in that. And if you listen attentively with the intention of amal and practice, inshallah you will also become mahbub and beloved. When being invited for bayan, I normally ask, what is the topic? Mufti Ahmad Sahab kept the topic open. Now when it's open, you get more confused. If you have a topic, then you can do mutala on that subject. Mufti Ahmad Sahab said it's open, you can talk whatever you like. I was a bit confused. I was thinking of talking about something else. Maybe opening ayat of Surah Al-Isra and this tafsir. But then Mufti Ahmad Sahab recited قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ in Salat, so I think this topic is better. These verses are in the beginning of Surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala mentions 8-10 qualities of believers. We should all bring those qualities within. When these verses were revealed, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam was really happy. In the morning, he was in a very joyous mood. And he said to the Sahaba, last night these verses were revealed. And I'm really happy. And then he made dua. Allahumma ighfir lana, warhamna, wa'afina, wa'afina. وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا عنك وارض عنا وأصلح لنا شأننا كله. By way of shukrana of Allah for giving him these ayat. So this shows the greatness of the ayat, how happy Nabi sallallahu alaihi wasallam was on these opening verses of Surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala says, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. कामयाब हो गए ईमान वाले. Indeed, those who have Iman have achieved success. They have achieved their goal.
Who are they? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, who have khushu' and humility in their salah. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, and who turn away from laghwiyat, unnecessary stuff, futile stuff, which is not needed, which does not concern them. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, and those who practice on the zakat, who give zakat properly. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, and those who protect their modesty, chastity. Who protect their chastity and modesty. ऐसा करो भाई. Oh my friends, को इधर बिठा. तो इधर बैठ. बस. चौकड़ी मार के बैठो. पराठी मारो. Those who protect their private parts, modesty, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك, who goes beyond that, other than their wives, then they are the ones exceeding the limits. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, who are mindful of the trust with which they are entrusted, and who are mindful of their agreement, contract, promise. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, again they are mindful and they guard their salah, abandi of salah. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ, they are the inheritors, the heirs. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ, who will inherit Jannatul Firdaus, and whom فِيهَا خَالِدُونَ, they will remain there forever. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Falah is used in the Quran in many places. Surah Al-Baqarah starts with أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. They are the successful ones, who have the 5 qualities in them. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. They are on the right track and they are the successful ones. In Sabbi Isma Rabbika al-Ala, Allah said, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. The one who purifies his nafs has succeeded. Successful is the one who purifies his nafs and who takes the name of his Rabb and then prays salah, performs salah properly. In Surah Al-Shams, Allah said, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. The one who cleanses and purifies his soul is successful, and the one who mixes it in dust has failed. Sometimes Allah uses the word fawz. Allah said, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Whosoever obeys Allah and His Rasul has gained supreme success. Allah says, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Whosoever is moved away from the fire and admitted into Jannah has succeeded, he is the successful one. So there are many ingredients of success mentioned in the Quran. We have named a few of them. Surah Al-Baqarah, believing in the 5 tenets of faith is a form of success. Cleansing and purifying the soul is a reason for success. Obedience to Allah and His Rasul brings success. And the ultimate success is being saved from the azab of Jahannam and admitted into Jannah straight away with
Sabiqeen awwaleen with Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, with Sahaba, Tabi'een, Tabi'i Tabi'een, Salaf Salihin, our Mashayikh and Awliya. That is the ultimate supreme success. Without hisab, kitab, without azab, without any punishment in Jahannam, without it going in Jahannam for a minute, let alone a day or a week or a month or a year or a few years. Crossing the Pul Sirat bridge over Jahannam at the speed of light and straight into Jannah along with Nabi sallallahu alaihi wasallam. This is what we must be aiming for. May Allah give us all that Fawzan Azim. It is a huge success. Allah says here, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Success comes to those who have Iman. Iman, one is Nafse Iman, another is Kamil Iman. Nafse Iman we all have it, which is mentioned in Hadith al-Jibreel. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. You believe in all this, and every moment believes in it. Without this, you can't be a Muslim. Sometimes some people from the media who go to Muslim lands, reporters, they wear libas like Muslim, and then they say, I have this piece of paper, if I declare this, then I am a Muslim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Now I am Muslim. भाई इसको पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होता. इस्लाम ईमान कहाँ होता है? इसको आप हजार दफे लाख दफे पढ़ो फिर भी मुसलमान नहीं बनोगे, वो दिल में नहीं उतरा है. यकीन, tasdeeq, belief, faith, certainty, will, conviction. You have to know that this is right. Then you are a mu'min. If there is any shak, doubt, suspicion, your iman goes. Once in Darul Bari, I used to do tafsir of Quran among doctors. So there was some discussion about yaqeen. So I said there are three types of yaqeen. Ilmul yaqeen, aynul yaqeen, haqqul yaqeen, all mentioned in Quran. Ilmul yaqeen, knowledge with certainty. Like you know that fire burns. Aynul yaqeen means you see with your eye and you get the yaqeen. You see someone who's burnt by the fire. That's aynul yaqeen. And haqqul yaqeen is when you yourself experience that yaqeen, you were burned in the fire. That's haqqul yaqeen. Ilmul yaqeen, aynul yaqeen, and haqqul yaqeen. Quran said, Inna hadha lahu haqqul yaqeen. So our marhum Dr. Baig Sahib says, Maulana Sahib, there is a fourth type as well. So fourth type कौन थी? वो हमने नहीं देखी. पर मैं एक चौथी किस्म है उसका धुलमुल यकीन. धुलमुल यकीन. दावा बोल धुलमुल. इधर उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर. ये धुलमुल यकीन भी होता है बाज़ों में. वो यकीन ही नहीं होता है. कभी इधर जाते कभी उधर जाते. बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाबा रहमान राम राम. मुसलमान के साथ हो तो अल्लाह अल्लाह और ब्राह्मण के साथ हो तो राम राम. ऐसे भी लोग इस जमाने में ऐसे मुनाफिक बहुत हैं कि उधर भी जाते हैं, उधर भी लड्डू खाते हैं, उधर भी लड्डू खाते हैं. कहते हैं हमको दोनों तरफ से सही मिल रहा है, इधर भी पैसे लो उधर भी पैसे लो. ये कोई यकीन वकीन नहीं है. अल्लाह की यहाँ इसका कोई एतबार नहीं है. इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, जुल्मुल यकीन कुछ नहीं है. डॉक्टर साहब ऐसे ही जोक कर रहे थे, हंसी करते थे. तो ईमान विद कन्विक्शन, proper yaqeen, firm yaqeen. Iman on Allah, on Malaika, Farishtas, on books of Allah, messengers of Allah, on Day of Judgment, Hisab, Kitab, दूध का दूध, पानी का पानी रद्द कर दिया जाएगा. इंसाफ दिया जाएगा. जालिम मजलूम में इंसाफ हो. यकीन उसका, जन्नत, जहन्नम, everything that Allah and His Rasul say is true about akhirah, life after death, and taqdeer, whether good or bad, we feel is good, we feel is bad, everything is true.
We ask Allah, Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khayra. Allah, whatever you decide for us, please make it good decision. Amen. And help us to be happy with whatever you decide. Razidu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. So, this is Iman yaqeen. Now, this level of Iman yaqeen sometimes goes up and down. You can feel it going up and down. Ramzan comes, you shoot up like a rocket. Namaz, Tarawih, Masjid, first serve, Iftari, right? Quran, Tilawat, Tasbihat, Zikr, Fikr, ladies, Musalla down, Rehal down, Quran Sharif down, Tasbihat, MashaAllah is good. Karna dehi, is alhamdulillah. But as soon as Eid ka chand hua, to sab kuch khatam. Masjid ka attendance jo hai, sum karke down. Ladies का मुसल्ला भी गया, बुर्का भी गया, लहल भी गया, कुरान भी गया, अब तो स्क्वायर। तो ये नहीं होना चाहिए। रमजान में बेशक अपनी ईमान की बैटरी चार्ज होती है, तो उसको चार्ज ही रहने देना चाहिए। चलो अप एंड डाउन हो, लेकिन एकदम फ्लैट नहीं कर देना चाहिए। तो ईमान goes up and down. You have to strengthen. Quran Sharif talks about this type of Iman as well. In one place, Allah mentions 5 qualities, and then Allah says, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." They are the believers in truth, real believers. Pakke Iman wale, strong Iman wale. कौन है वो 5 qualities? किन में है? इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम. When Allah is mentioned, just begin to tremble. Come, Allah come. Allah nahi farmaya. Allah has said this. This is why some of the Salaf said that in the beginning, when someone said to them, Ittaqillah, they would immediately stop. Oh, thank you very much. Shukriya. Remind me. For who gives? और आज अगर कोई किसी को कहे इत्तक़िल्लाह तो mind your own business. Why you judge me? Allah will judge me on the day of Qiyamah. You can't judge me. I might be wearing this type of clothes, but my heart is clean. बात है कोई इत्तक़िल्लाह जो कहे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए. या अल्लाह का नाम ले. Thank you very much for reminding me. I should fear Allah. I have done something wrong. I made a mistake. Allah forgive me. I won't make this mistake again. But today, we've reversed the table. We do the opposite of what Salaf Salihin used to do. Allah said, "Ladina idha dhukira Allah, wajilat qulubuhum." Dil kaam uthta hai. Ro dekhte the. Oh, Allah ne kiya. Hazrat Umar radiyallahu anhu kana waqafan 'inda kitabillah. Allah ka kalam aa jaye, fauran nahi atak jate. Ek qadam bhi aage nahi बढ़ा. तो पहली सिफत ये और भी सलफ सालिहीन अल्लाह का नाम लेते थे तो रोते थे. अल्लाह के इश्क में, मोहब्बत में जिक्र जब करते थे अल्लाह 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 अल्लाह, रोते थे, हाल तारी हो जाती, अजीब कैफियत उनकी हो जाती है. जिक्र के वक्त हाल ऊपर तारी हो जाता, रोंगटे खड़े हो जाते, घंटों के घंटे जिक्र में बैठे रहते. उसी दिन जिक्र को आवर्स एंड आवर्स. हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह in his khanqa he used to have zikr majlis of more lengthy many hours. Zakirin would come and go, but Hazrat would be sitting with his head blown down in muraqabah, contemplation. Sometimes Hazrat would lift his head up and read this share. Allah Allah hai to goya jaan hai, Allah Allah hai to goya jaan hai,
वरना यारो जान भी बेजान है, वरना यारो जान भी बेजान है. If Allah is in your heart, then you have life. If you haven't got Allah in your heart, then you are lifeless. Life है ही नहीं. Allah दिल में. Maulana Rum Rahmatullah alayhi used to say, Allah Allah ince şirin astanam, şiro şakar mi şabat canam tamam. Allah Allah कितना मीठा नाम है. जब मैं अल्लाह अल्लाह करता हूँ तो मेरे बदन का रुआ रुआ मीठा हो जाता है. How sweet is the name of Allah. When I do zikr of Allah, my whole body experiences that sweetness. तो जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो हाल आदि हो जाता है, कैफियत हो जाती है. हम लोगों को कैफियत नहीं होती है. मोमिन कामिल की ये कैफियत होती है. वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना. अल्लाह की आयतें पढ़ कर सुनाई जाती है. कुरान शरीफ is recited to them, their ईमान increases. कुरान सुनकर मजा आता है. कुरान सुनने में जी लगता है. बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको गाना सुनने में मजा आता है, म्यूजिक मजा आता है. खाना कुरान शरीफ अगर रख दे तो ये क्या काम करेंगे, मालूम हुआ ईमान में कमी है. हजरत मौलाना शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, one young man said, Hazrat, the lazzat and the pleasure I get in song, I don't experience that in Quran. Hazrat said, अभी कुरान से बुअद है, जब कुर्ब हो जाएगा तो फिर ये हालत जाती रहेगी. This is because you are distanced from the Quran. When you come close to the Quran, then this kayfiyat will fade away. Then you love Quran. We are also today distanced from the Quran. We never hold the Quran, we never read the Quran. How much Quran did you read in the last 24 hours? Last week, last month? After Ramadan? You might have read a bit of Quran in Ramadan, but after that, chopper. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. My people have thrown the Quran behind their back. They've abandoned it. That's what we're doing. نبذوه وراء ظهورهم. Yahud threw away the Torah behind their back. We have to read the Quran, listen to the Quran. Just listen to the Quran. Whoever you like, whichever Qari, Mahir Mu'aqqili, Abdul Rahman Sudais, Shurain, whichever Qari's tilawat you like, listen to the Quran. It will increase your iman. The more Quran you hear, the more your level of iman will increase. زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. Third quality for gaining iman kamil is tawakkul ala Allah. हर हाल में अल्लाह पर भरोसा. अच्छा हो बुरा हो तकलीफ में हो, अल्लाह पर भरोसा. देखो गज़ा में इतना सारा हो रहा है, लेकिन वो बेचारे क्या बोलते हैं, हस्बुनल्लाहु 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 Allah काफी है. He's talking. Because they are in pain, we can't understand their feelings. One person was saying, I was watching this short clip, and he was saying, I've been in Gaza, my family is there, so many people from my family have been killed. You can't understand the pain they are going through because you've not experienced it. पर हमारे घर में एक मैयत हो जाए तो हमको कितना गम होता है, कितने दिन तक हम रोते हैं. और यहाँ तो 27 members, 30 members of one family, instantly 15,000 people. अल्लाह 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 क़यामत की पूरी है. बहुत दुआओं की जरूरत है. अल्लाह बेशक आप नेमल वकील हैं, आप अपने कुदरत का मुजाहरा फरमा सकते हैं. आप ही कुछ कर दीजिए. हम तो बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं. Allahumma alhamdulillah. Have mercy upon our weakness. No matter how tough time you're going through,
Third sifat of Iman Kamil is wa'ala rabbihim alladhina yuqimuna as-salat. And fourth is iqamatu as-salat. Allah did not say yusalloon, yuqimuna as-salat. Because yusalloon could be from time to time. And yuqimuna as-salat means proper punctuality, establishing in the proper manner, with proper tahara, cleanliness of the clothes, cleanliness of the body, cleanliness of the place, facing the qibla, having proper wuzu, proper tahara, clean, and then with khushu, khudu, and attention, focus. This is iqamatu salat. Yuqimuna as-salat. And وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And they spend from that which we have provided for them. Meaning they are generous. They are not stingy. They spend where it should be spent. On the family members, first of all, providing for them wives, children, food, clothing, medicine, whatever they need. And then others, your own locality, your masjid, your madrasa, your school. And then others who come where there are disasters, helping, being charitable. If you have these 5 qualities, then أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا पक्के ईमान वाले हैं هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق. So, قد أفلح المؤمنون will mean those who have the nafsi iman and the kamil iman. They have perfect, complete, 100% full iman are muflih. قد أفلح المؤمنون. Allah वाले, सूफी साफी, बुजुर्ग, नेक तबीयत के ये लोग कामयाब हैं. आगे फिर उनकी सिफत अल्लाह ने बयान की, الذين هم في صلاتهم خاشعون. First sifat Allah said is that they have khushu' in their salah. Khushu' means humility, humbleness. To stand before Allah means humility. Humility. Not whilst our mind is drifting away here and there. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam saw a person who's praying salah and is cutting his hair, he's looking here and there. And he said, لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. If this person had khushu in his heart, then he would have had khushu on his body, on his limbs. الظاهر عنوان الباطن. Your appearance is a headline for what's inside. It shows, it describes what's in the heart. You have to have good appearance standing before Allah. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu was narrated by Ibn Kathir in his tafsir. خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. When you come to the masjid, look nice, look beautiful. He narrates, Abdullah ibn Umar bought one jubba for 1,000 dirhams to wear at salah time. He would only wear that for salah, and after salah he would take it off. So I have to beautify myself because I'm standing before Allah. You have to look good to standing before Allah, right? ऐसी कैसे स्क्रफिया में खड़े हो जाए आदमी, कपड़े में से बदबू आ रही है, तेल की बदबू, मैकेनिक है उसकी बदबू, कोई और चीज है, खाना पका के खाया है तो पूरी मस्जिद को खाना खिला सुना रहा है कि मैं किचन में पका के आया हूँ. भाई जरा अपने कपड़े जरा अच्छे पहन दिए, खुशबू लगा के हो, स्मोकिंग करते हुए आ रहे हैं आप किसी के बाजू में खड़े हो, वाह उसकी नमाज खराब हो, सर में दर्द शुरू हो गया. तो मस्जिद में आते हैं सिगरेट पी के कैसे आते हैं, सिगरेट पीते पीते भी मस्जिद के बाहर कपट पहनते हैं. नहीं भाई, अल्लाह के यहाँ जाते हैं, नमाज के लिए आए तो ये उंगलियों को तशबीह करना भी मना है. अगर मस्जिद में बैठ के उंगलियां, you can't interlock your fingers in namaz, then you shouldn't do them when you're walking for namaz as well. मना किया है इससे, कराहत है इससे. मालूम हुआ कि मस्जिद में आए तो जरा अच्छी वज़ाफ़त से खुशबू लगा करके अच्छे कपड़े पहन कर आए. प्याज लहसुन खाकर ना आए, वरना जो डकार जो आई तो स्टिंग बम छूटेगा, पूरी मस्जिद परेशान हो जाएगी. ये टट्टी जैसी भूख से.
फरमाया प्याज लहसुन खा के, onion, garlic, don't come to masjid after eating that. So masjid has adab. You need khushu' in your salah, humbleness, humility, tawadu, standing, total concentration. I'm standing before Allah. I'm bowing down in front of Allah. Subhanallah, Subhanallah. I'm putting my forehead in front of Allah. Subhanallah, Subhanallah. This khushu' is needed. Today, the khushu' is gone from our salah. Our mind is drifting here and there. I saw this person praying salah by my side, and his phone rang. Took the phone now. He's talking about the message. So in salah, he started replying to the message. The Imam Sahib is reading Quran Sharif. He's behind and he's texting him now. Hey, namaz mein bale kasid ho gaya ye namaz kaun fasid. This Imam Sahib in Turkey was leading namaz, he was reading Quran, his phone rang, took the phone out. أنا في الصلاة. This is our level of khushu'. Perhaps this is why Allah said after khashirun, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ, who turn away from lahwiyat. Mobile is lahu. If you want khushu' in your salah, you will have to leave your mobile. Otherwise, you can't get khushu' in your salah. Leave your mobile 5, 10, 15 minutes before namaz, 5, 10 minutes after namaz. Leave it in your room, somewhere safe, in your car. Log काम में जाते हैं काम पर, mobile not allowed, they have to leave it in the car. Prison में काम करते हैं, imam mujrimin, they have to leave in the car park, in the glove compartment. They only look at it when they come out of prison at 4 o'clock. Afterwards, so you have to leave it somewhere. In masjid, if you want to concentrate on your salah, you have to leave your mobile. Mobile is huge distraction. Sometimes what happens is some emergency message comes. And you look at that message and there's something disturbing in there. Now you put it away, but then you start to salah and your mind is gone and you're disturbed and you're constantly thinking about that thing. Sometimes your wife is nagging. उसने गड़बड़ सड़बड़ कर दी और दिमाग नमाज में वो बीवी याद करेगी, बीवी का वो नानी परेशान कर रहा है. तो हजरत शाह वसीउल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत नमाज में खुशू खुजू हासिल नहीं, क्या करें? How do we get खुशू in our salah? And Hazrat said, नमाज के बाहर खुशू इख्तियार करो तो नमाज के अंदर भी खुशू है. If you bring khushu in you outside salah, then you will get khushu inside salah as well. And perhaps this is why Allah tells us to pray some sunnats before farz. So we have to come to the masjid early, pray our sunnats, sit down for a while, do some zikr azkar, and bring ourselves closer to Allah and get that concentration, attention. And then when we stand up for the main ibadah, which is for us, then our mind is there. We've forgotten the dunya. And this is why when you say takbir tahrima, what do you have to do? Lift your hands up to your earlobes. Right? Allah could have said this, Allah Akbar. Why do you have to lift hands? One of the hikmats of raising the hands, Allah Badruddin Aini writes in Sahih Bukhari, is that it's to throw the dunya, all your tension, problems behind your back. And say to yourself that everything is insignificant, everything is small, Allah is the greatest. Allahu Akbar. Allah is the greatest. All my problems, my wife, my nagging, my job, my business, this, that, tension, everything is small in front of Allah. Allah is the greatest, He can take care of it. And if you say takbir tahrima with this concentration and you pray namaz with concentration, Allah will definitely remove your problems.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. May Allah give us khushu'. May Allah give us complete, kamil, perfect, 100% iman, iman haq, iman kamil. والذين هم عن اللغو لغويات, anything that is useless, لا يعني. Too much لغويات, especially kids. Computer games, always computer game. चुपचाप से मम्मी पापा का फोन ले लेंगे, अपनी बेडरूम में घुस जाएंगे और गेम खेलना शुरू कर देंगे. दादा दादी का नानी का फोन ले लिया, अब उठने में फोन कहाँ गया, मेरा फोन कहाँ गया, तो वो कपड़े को बेडरूम में लेके खेल रही गेम्स. कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पर हम गेम खेल रहे हैं. गेम. This is love. This is entertainment. Entertainment is when you got too much on your head and you want to relax a little bit, right? 15 minutes, 20 minutes, half an hour, finish. उसके बाद हो गया, relaxation हो गया, फिर you get on with the job. अपना जो काम करना है वो करो. लेकिन हर वक्त गेम. अच्छा, दूसरी बात, ये गेम जो है बच्चों के लिए है. आजकल तो सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े भी गेम खेलते हैं. हाँ, many oldies. हम एयरपोर्ट पे बाद में देखते हैं, जब जा रहे होते हैं तो वो उसमें लाउंज में वेट कर रहे होते हैं, एकदम खूबसूरत बूढ़ा और वो कंप्यूटर गेम खेल रहा है बच्चों की तरह से. अब पहले तो स्नेक्स एंड लैडर्स होती थी, अब तो ये स्मार्टफोन आ गया, पता नहीं उसमें कैसी गेमें हैं ताकि बना. अब वो घंटों के घंटे, hours and hours they are wasting on it. Life is melting away like the block of ice on a hot day outside in the park. It melts away and you don't even realize that the whole block of ice is gone. Your life is melting away like that, and you are in laghwiyat. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ. Laghwiyat will also include films, movies, right? Dramas, wasting time. And laghwiyat will include your social media, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. Right? Once you go on it, you don't stop. एक के बाद दूसरा तीसरा वीडियो चलता ही रहता है. वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि आदमी को सोचने का मौका ही नहीं देते. हाय हमारी जिंदगी वेस्ट हो रही है. अल्लाह से वल अस्र, by the time innal insan fi khusr, mankind is at a loss. इंसान खसारे में पड़ा हुआ है. इल्लल लज़ीना, मगर जो चार काम करें वो खसारे में नहीं. ईमान, अमल सालिह, तवासी बिल हक, tawasi bis. They have proper iman belief. They are working righteous deeds, busy in doing good deeds, and they go out and encourage one another to hold on to haqq and truth, and they encourage one another to do sabr and be patient. Don't be impatient. Don't be impatient by trying to be a millionaire overnight. Who wants to be a millionaire? And उसके लिए हलाल हराम जायज ना जायज, अल्लाह इंटरेस्ट में, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, फ्रॉड, दिस दैट, खसारे में. नो सबर, बेसब्रे हो गए हैं लोग. इजी मनी चाहिए, इजी मनी, बस गेम खेलते रहना है और पैसे आते रहते हैं. तो काम कौन करेगा? जॉब पर बहुत से लोग काम पर जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, खेलते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं. मेरा एक दोस्त है, my friend is an electrician in London, and he's got some Eastern European workers, and they're really hard workers because they've been through tough times, and they work really hard. They don't waste a minute. He says, I got some 3-4 of our lot, and they're so good. They don't do anything properly. They just waste time. And if I tell them to do something, they take this wire from here to there, and if something in the middle, they'll come and ask me, "Buddy, what shall I do over here?" It's not. You use your brain, my friend. Very much people. I told you to do that, don't do it. But they just don't. They don't know how to do it. And it says in this country, in a few years, 10 years time, you won't be getting any workforce because the generation that's coming up, they don't use their brains.
They're always on the mobile and this and that. Even doctors. डॉक्टर की हम भी जाते हैं तो डॉक्टर भी कंप्यूटर पे देखता है, अभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल वो कंप्यूटर में चेक करता है कि इस बीमारी की क्या हुआ है। तो पहले डॉक्टर तो माहिर होते थे ना, आपकी बीमारी सुन करके बगैर कंप्यूटर के वो पूरा आपका एनालाइज कर लेते थे इसको क्या तकलीफ है और उसके हिसाब से दवाई, तो कंप्यूटर दवाई देता है, डॉक्टर तो देता ही नहीं। अब क्या होगा सोसाइटी का? तो लघवियात, these computers and whatever is coming here, it is destroying us, killing us. नई नई स्कीम आती है, बिटकॉइन, वन कॉइन, दिस कॉइन, दैट कॉइन, ये लघवियात है भाई, नहीं यार, सब ऐसी बेकार बकवास, तुम तुम्हारे पैसे लूट रहे हैं, क्यों इसके पीछे पड़ते हो? छोड़ो इन चीजों को। ऐसी स्कीमों में, पिरामिड स्कीम जितनी भी होती है बेकार होती है। पिरामिड स्कीम में कोई जीतता नहीं, कोई मालदार नहीं बनता, कितनों के हजारों लाखों लुट गए इसको। ये लघवियात है। जब भी whenever you see anything love, just turn away. अल्लाह का शुक्र है हमारे हजरत की तरबियत, हम कभी ऐसी स्कीम में पड़े ही नहीं, एक पैसा भी जाया नहीं किया हमने। बहुत सी स्कीमें आई, कोई कहे ये ले लो, वो ले लो, चॉकलेट स्कीम, दिस स्कीम, दैट स्कीम, तुम करो, अलग बंदा। एक दफे एक आदमी मुझे कहता है, मौलाना साहब, I have a friend in Dubai, if you give him 30,000, he'll make you 60,000 in 6 months. कहते तेरे पास कैसे है कि तू दे दे, तेरे पास नहीं, मैं कहाँ से लगे, तू मालदार बन जा। ये लघवियात है, बेकार चीजें हैं। Allah Ta'ala says your mentality should be such that whenever some love and futile, useless thing comes to you, you just turn away and go your own way. Hadith is narrated by Sayyidina Hussein ibn Ali or Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. That Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." It is from the beauty of the Islam of a person that he leaves those things which do not concern him. मेरे उससे क्या लेना देना है? मुझे उससे I don't talk about it. I just meet my life. I'm, my namaz, my ibadat, whatever I have to do, I have to fulfill my duties properly. So you do your stuff and try to make Allah subhanahu wa ta'ala happy. This is your duty. And a lovely moment. And then third quality, first quality is the fourth way. Falah is for number 1, Imaan. Number 2, khushu in salah. And number 3, turning away from laghwiyat. And number 4 is zakatify, being generous, charitable, giving your zakat properly, calculating your zakat properly. Sometimes we give zakat, khairat, lillah, fi sabilillah. That's not zakat. Zakat, you have to calculate properly everything you have, and then you give 2.5% on that. तो वो तो तुमको देना पड़ेगा, वो फर्ज है तुम्हारे ऊपर। और अगर उसमें गड़बड़ हुई, सिर्फ नफली दे दिया तो काम नहीं चलता। If a person doesn't pray his farz namaz and he just prays nafil namaz, then is he doing something right or wrong? It's wrong. The farz comes first, nafil is afterwards. So nafil sadaqah, nafil khairat, nafil lillah is afterwards. First is your farz zakat. Sit down, calculate your zakat. How many savings you have, how much stock you have, how much is its value, how many shares you have, how much this, that, everything. और उसका total estimate निकाल के zakat calculate करो। ज़्यादा दीजिए zakat, कम मत दो। Give more than what is due on you, don't give less. And after that you can give sadaqah, lillah, whatever you want. But zakat you have to calculate properly. And you know what is a great benefit of zakat? حصنوا أموالكم بالزكاة. If you give your zakat properly, your mal is protected. Allah looks after you. Your factory, your building, your land, your zameen, your business, your shop, Allah will look after it if you give your zakat. And on the other hand, ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلك. If you don't give zakat, and that zakat mixes with your money, then that zakat will destroy your money. Because the zakat
2.5% is not your haq, is the haq of the gharib, miskin, poor. And you did not pay that up, you mixed it in your own money, so you are usurping and consuming the haq and the right of that miskin, so this will bring destruction to your other mal as well. Give your zakat for whom is zakat defined. Then you will get success. And then وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. हाय शर्मगाह की हिफाजत बहुत मुश्किल हो गया है, शर्मगाह की हिफाजत, जिना, शराब, लिवाकत, ओए होए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारे सोसाइटी की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे, इस बला से नजात दिलाए, हमारी भी और हमारे दिल में जो लोग हैं उनकी भी हिफाजत, इनको भी अल्लाह हिदायत समझ और गलत को गलत समझने और उसके बाद आने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से look after your private parts, don't fornicate, don't commit adultery, don't do silly stuff. Allah subhanahu wa ta'ala said, you can only fulfill your desire with your zawja, partner. Other than that, Allah said, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. If you seek someone else, then you are trespassing the limits. You are going out of the boundary. If you go, na'uzubillah, to some prostitute, do something bad, filthy, dirty, this will include watching things you shouldn't be watching. Because hadith says, zina of the eyes is to look, zina of the ears is to hear, zina of the tongue is to speak, zina of the hands is to touch, zina of the feet is to walk to the place of zina. So the whole body is zina. And then finally, the act confirms what had taken place before. So we have to avoid all the muqaddamat as well. What comes before that as well. You know, if we watch this type of stuff, then we will get that hayjan, shahwat, desire. It will erupt and then you will be uncontrollable. If you are single, you won't be able to control yourself. You do something bad. If you are married and your wife is not allowing you, then you go somewhere else. This is why hadith puts great emphasis on the wife obliging to the husband when he needs her. Hadith says even if she is on tannoor, she should fulfill his need. Because the tannoor fire and the atta which she was making roti is all his property. If he doesn't care about it, then it's his problem. You go to him and fulfill his need. So Allah said, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. To be a kamil mu'min, a perfect mu'min, and to gain success in dunya and in akhirat, you have to protect your modesty, your private parts. Don't do anything bad, anything wrong. Otherwise, you won't get success. To be successful, you have to look after your modesty, your chastity. May Allah protect us, our society, our young ones, boys, girls, elders, young ones, men, women. Allah protect us all from this habit. We live in a society where it's not only legal, it's promoted. And zina is okay, nobody thinks of it as bad. In some Muslim countries like Egypt, they brought this rule, qanun, that if two persons want to do it on their own accord, then we will not interfere. La ilaha illallah. Islamic country or Quran ke khilaf rule. If they want to do it themselves, then we won't interfere. No, Islam says there are laws of everything. When zina is widespread, you will hear about illnesses, diseases which you never heard of before. ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, ये पहले कभी ऐसी बीमारियां नहीं सुनी थी. जिना की वजह से जिना इतना आम हो गया है. हमारे हज़रत शेख यूनुस साहब फरमाया करते थे, भाई निकाह और शादियां सस्ती करो
अगर तुमने निकाह और शादी को महंगा किया तो जिना सस्ता हो जाएगा। 10 पाउंड में 20 पाउंड में प्रोस्टिट्यूट मिल जाएगी, और निकाह तुमने इतना महंगा कर दिया। If you make nikah and shadi very expensive, then zina will become cheap. So make sure your nikah is cheap. Just do with the minimum expense that is needed. Don't do too much large halls and too many people and too many expenses. No, simple sada. You know, in some nikahs of Nabi sallallahu alaihi wasallam, he didn't have money or anything for walima. So what he did was he told people, bring your food, and he gathered it on the dastarkhan. Now khao na, खाना भी तुम्हारा, खाने वाले भी तुम, वलीमा मेरा। ये हुआ था ना, खैबर से वापसी पर हजरत सफिया का वलीमा है। He said, भाई दस्तरखान बिछाया, and he said, everybody bring whatever you've got. Some people brought khajur, some people brought some paneer, cheese, some people brought some pieces of bread. He spread it out, and he said, chalo khao, eat from here. This food is yours, you are eating, walima is mine. This is a sign that he was gharib miskin hai. He can also do walima and shadi, you know, simply. One sahabi sitting among the majlis, a lady comes and says, Ya Rasulullah, wahabtu nafsi. I have gifted myself to you, accept me in your nikah. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam looked at her, but he did not have the desire to do nikah at that time. So he just looked down, he didn't say anything. So she sat down. So one sahabi stood up and said, Ya Rasulullah, you know, do my nikah with her if you don't want to do nikah with her. And Huzur said, okay, what have you got? Nothing. Said, you must have something. I don't know the sheet which I'm wearing. So go and find something. See if you can find a ring of metal. Not gold, not silver, metal ring. He came back and said, I can't find a metal ring. So Huzur said, okay, how much Quran do you know? And he said, I know such and such surah, so and so surah. And he said, Izhab, faqad zawajtuka bima ma'aka min al-Quran. Go, I'm giving her in your nikah because of the Quran which you know. And she was happy as well. Yeah, I'm happy. No. This morning in the sabak, this was a subject I was mentioning, Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori. Hazrat Lahori is big Mufassir Quran. लाहौर हजरत मकाम अजीब, हजरत की कब्र की मिट्टी से खुशबू फूटी इमाम बुखारी की तरफ इधर बड़े बुजुर्ग सब वली अल्लाह। हजरत said, my khusar, my father-in-law recognized me before everybody else. Everybody recognized me in my old age. He recognized me when I was young. What happened was Hazrat Maulana Ahmad Ali Lahori rahmatullahi used to study in Darul Uloom. His ustad was Hazrat Shaykh al-Hind. So, his father-in-law comes to Darul father-in-law to be, and he knew Hazrat Shaykh al-Hind, Maulana Mahmud Hassan Deobandi. He said, my daughter has reached the age of marriage. If you know someone, a young youth, a nice person, young man, then I want to give her a nikah. So Hazrat Shaykh al-Hind said, you see that young boy sitting there? He's a good young man, pious, and he works hard as well. However, he's a believer, new Muslim. He's from previously his family are all Sikh, from Sikh. So it's up to you. So his father looked at Hazrat Maulana Ahmad Ali Sahib, a young student, and he said, no, he looks all right. Yeah, I'm happy with him. So Hazrat called him over. Beta idhar, shadi karni hai. Get back. गरीब मिस्कीन आदमी, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, मेरे साथ कौन शादी करेगा? वो तो मालूम ही। If you want to marry, are you accept? He said, okay, if it's your, yes, I will. Okay, sir. अब जो है हजरत ने ऐलान कर दिया कि भाई शाम को असर बाद निकाह होगा. After असर निकाह. Now Hazrat Lahori didn't have any other rules besides the one which he was wearing. So he went outside, didn't know what to do. His friend said, "भाई जल्दी जल्दी धो लो इसको, wash करके इसको पहन लो." तो बेचारा हजरत ने जल्दी जल्दी he washed his clothes. But it was winter time, so when he hung for dry, his jubba he didn't dry. So at asr time he came wearing that wet jubba. गीला गीला jubba पहन के आगे निकला, पहन के दिखा हो.
अब उनके खुसर साहब ही organized some place to stay or in Hazrat or sharing or a little bit. A miskin person, he kept on studying and still living with his wife. After a month or so, her mother comes back to check on her and she asks, Betty, how are you? Are you okay? And you know what she said? क्या जवाब दिया? अम्मा, हमने तो सुना था कि जन्नत मरने के बाद मिलती है, मुझको तो जन्नत दुनिया में ही मिलती है. We had heard that paradise comes after we die. Allah has given me paradise in this world. My husband is so nice. He loves me so much. He's so kind to me. He's so nice. He's so softly spoken, so gentle. That I've got Jannah over here. Imagine he's got nothing in the dunya. She's got nothing in the dunya. Dunya में माल सामान कुछ भी नहीं है. If you look outwardly, they are poor, but she's so happy that he's saying, Alhamdulillah, I'm so happy. I can't be more. I can't say more. So the true happiness is the happiness of the heart and mind. So निकाह, शादी, ब्याह, ये सारा गाँव लश्कर हमने उसके पीछे लगा दिया है. ये हमारी इर्द गिर्द का जो कस्टम है ना, ये रिवाज, रस्म घुस गया है. From other cultures, Islam says keep your shadi biyah simple. Get your young ones married quickly. Don't keep them sitting at home for years and years. 25, 30, 35. There no more proposals coming, and they get into tension, depression, fall into depression. पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, खत्म हो गई जिंदगी, खत्म हो गई, तकलीफ हो गई. बच्चियों को छोटी है तो शादी करा दो. 17-18 साल में it's legal to get married. As soon as it's legal, get them married. निकाह कराओ, उनको रुखसत करो, खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे. This is how to protect the sharmgah and the chastity, modesty of our young ones in today's day and age. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. We are wali, we are guardians, we are responsible. We have to go and look for a partner for them. We have to help them to get married. We have to arrange it for them. We have to help them. It's our duty. Allah said, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. Ankihu is amr to the walis. Oh wali, go and find a suitable girl for your son, a suitable boy for your girl. You have to go and search and look out and help them and get them settled. In fact, you know what's written in Torah? I don't know whether I should say it or not. The right is in Mishkat. من بلغت ابنته 12 سنة فلم يزوجها فأصابت إثما فإنما إثم ذلك على أبيها. It's in Torah. Who's narrating it from Torah in the Jewish book? Whoever's daughter reaches the age of 12 and he does not get her married and she commits a sin, the sin will go on the father. But चलो 12 नहीं, लेकिन 18 जब लीगल हो गए उस वक्त तो निकाह कराना चाहिए. क्यों आपको बिठाया? यंग मैन है, उसका भी मन बुलिदा लहू वलद फलयुहसिन इस्महु वअदबहु फइदा बलग फलयुज़व्विजहु फइन बलग वलम युज़व्विजहु फअसाब इस्मन फइन्नमा इस्मु ज़ालिका अलैहि. Similarly, regarding the boy as well. If you have a child, give him a good name, give him good adab, tarbiyat, training, nurturing. When he is baligh, आजकल तो बहुत जल्दी नालायक बालिग हो गए. 10, 11, 12 साल के और बालिग हो गई. Yeah. Rasul is saying when he becomes baligh, when he is mature, get him married. If he becomes baligh and you don't do his shadi and he commits a sin, he will get the sin because he is baligh, and you will also get the sin because you delete his nikah. So we have to be mindful of this point as well, that we have to help our young ones to protect their chastity and modesty. This will be included in وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. अगर माँ बाप नहीं कर सकते हैं तो जवान लड़कों को भी तो सोचना चाहिए. खुद तुम ढूंढ लो, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, माँ बाप से कहो कि ये लड़की अच्छी है, मेरी निकाह मैं शादी करा दो. आप ढूंढो इसके लिए, लड़की ढूंढ ले कि फला लड़का अच्छा है और इज ओके, इज सुटेबल फॉर मी, मेरी शादी करा दो.
लड़के भी कह सकते हैं माँ बाप को, बुरी चीज नहीं, कोई ऐब नहीं, हम तो उसको ऐब बना सकते हैं, otherwise no ऐब. If you find suitable, you agree they are compatible, same age, everything is okay, you can live next to one another, no problem. जिंदगी गुजारो साथ साथ. अब तो इंटरनेट भी है साहब, बहुत सी दोस्तियां इंटरनेट पे होती है. कल मुझे एक भाई मिले, कहने लगे हाँ ब्लैकबर्न में एक अपना देसी लड़का है, इंडियन गुजराती, उसने वेल्स में को बांग्लादेशी लड़की ढूंढी. तभी बांग्लादेश में तो उधर वेल्स में कैसे गया? इंटरनेट पर उसी चैटिंग मीटिंग में दोस्ती हो गई. अगर ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, तो हो गई उसकी पैर वहां पे. तो देखा फैमिली अच्छी है और कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़की भी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी, ठीक है तुम दोनों खुश हो, करो शादी. यहाँ बीवी राजी तो क्या करे, फादी. तो शादी ब्याह में बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी कुछ ढूंढे, क्योंकि माँ बाप बेचारे समटाइम्स माँ बाप मासूम होते हैं, बूढ़े होते हैं और बाहर आते जाते नहीं हैं, कोई और ज्यादा ही नहीं. तो लड़का जो है खुद अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले, लड़की जो है अपने लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले, माँ बाप को हेल्प करे इस सिलसिले में कि आप यहाँ शादी करा लो. आपके भाई बहन है उसके लिए बड़ा भाई ढूंढ ले. मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब भाई बहनों की शादी में मैंने ही कराई. यानी वालिद साहब तो बूढ़े थे, बड़ी उम्र, तो वालिद साहब को ले जाना, बातचीत कराना, ड्राइविंग करना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ. फिर जब जो रिश्ता तय हो गया तो निकाह, वलीमा और सब बंदोबस्त, खिला पिला. वालिद साहब को कोई तकलीफ नहीं पहुंचती थी, सारा इंतजाम हमने किया. कभी वालिद साहब बूढ़े हैं वो कहाँ करेंगे, हम जवान हैं, सब काम हमने करना, तो हमने सारा काम किया, वालिद साहब को हेल्प किया. तो बड़े भाई हैं वो हेल्प करें अपने छोटे भाई बहन को. ये मुआशरा तब क्लीन होगा जब हम इस सिलसिले में जरा सीरियसली थिंक करेंगे. और आगे फिर फिनिश करते हैं, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदीहिम. अमानत है, इसका ख्याल रखो. कोई भी अमानत है, पैसे हैं आपको दी है कि 1000 पाउंड अमानत संभाल बाद में मिलेगी. या कोई और अमानत है, भाई मैं मुल्क जा रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी है, सीरीज इसको आपके याद में पार्क कर सकता हूँ, आपका बड़ा याद है, जरा संभालना. हाँ ठीक है, वो चले गए तो गाड़ी को संभाले. ऐसा नहीं कि जॉय राइडिंग में ले जाएं और वो आए उस तक गाड़ी की ठूस निकालते. If someone gives you something to look after, you look after it properly, and when they ask for it, you give it to them. To the extent that if someone tells you a secret, then that is also an amanat. One hadith says that if your friend tells you something, whispers something in your ear, and then he looks around, that person to need, who is listening, فهي amanat. That's also an amanat. So you can't tell that to anyone. So amanat, trustworthy, being trustworthy. Similarly, masjid hai, madrasa hai, you are a secretary, you look after the funds, right? That's amanat. Make sure एक पैसा भी इधर उधर ना हो, एक penny भी इधर उधर ना हो. You're working, your hours 9 till 5, right? तो आप जल्दी भाग ना जाएं 4 बजे, लेट ना आए 10 बजे. Right? Just because your boss is not watching, then you times में आगे पीछे करें, ऐसा नहीं. और चुपचाप से पैसे चुरा लें, किल में से पैसे जेब में रख करके चले जाएं, ये सब खयानत है. Anything amanat, anything you are entrusted with, right? Think carefully, you look after that amanat properly. If you do your work properly, Allah will give you lots of barakah, and your boss will be happy with you, your job will be safe. And alhamdulillah, these large companies, they have more trust on us than Muslims. That Muslims don't do khiyana. Muslims don't waste time. Muslims don't, don't bring in sick notes for without any reason. Sick notes, lying. They don't take a sick note. एक हफ्ते के लिए बीमार, साल के लिए बीमार, फिर हॉलिडे पे जा रहे हैं, फिर हॉलिडे स्टैम्प पे पकड़े जाते हैं. बहुत से गोरे इस तरह पकड़े जाते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करते. मुसलमान अमानतदार हैं. तो ये बड़ी कंपनी वाले हमारे लोगों को ट्रस्ट करते हैं. We have to keep that trust. Don't break that trust. तो ये चीज है. बहुत सी हमारी पर्दे वाली लड़कियां हैं, उसको भी हायर करते हैं. हमारे प्रेस्टन में इधर जो क्या कहते हैं उसका HMRC, उसकी ऑफिस में उस वक्त जाते हैं तो HMRC वालों को घर में ही काम करना होता है. बहुत चालाक है, होशियार है. हम हमारा इलेक्ट्रिक बिल भी हमारा, सब कुछ हमारा, उनकी बिल्डिंग का सब खर्चा बढ़ता गया. हमको कहते घर में बैठ के काम करो. और ये HMRC वाले घर में काम करते करते पीने सोचते खा के मोटे हो गए. बैठे रहते हैं, चलना फिरना तो होता नहीं है. पहले तो काम पर जाते थे, आते थे, अब चलना नहीं है तो बॉडी उनकी बढ़ गई, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं.
तो उस वक्त एक बात थी कि ऑफिस में हमारी कुछ बच्चियां भी काम करती थी जो निकाब पहनती, तो फायर अलार्म गया, एवरीबॉडी वाज आउट। फिर जब वो वापस जब बिल्डिंग में आने लगी तो वो गार्ड वो खड़ा है और वो सबका आईडी चेक कर रहा है। तो निकाब वाली लड़की आई तो उसने कहा कि भाई लिफ्ट यू निकाब आउट सी फेस। तो मैनेजर वहां खड़ा था, उसने कहा नो शी डजंट नीड टू बन, आई नो लेट्स डू। देखा ना मैनेजर कितना अच्छा है, उसको ट्रस्ट है, ये लड़की को मैं जानता हूँ, इसका मुंह देखने की जरूरत नहीं, अनबन। तो वो तुमको ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो एज अ मुस्लिम कौम वी शुड कीप दैट ट्रस्ट। चीटिंग नहीं करने का कि ये फिर कहेंगे सारे मुसलमान ही ऐसे हैं, सारे मुसलमान धोखेबाज हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमानतदारी से काम करो। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम एंड वअहदिहिम, ahd means contract, agreement, promise. If you make a contract, you sign it, then make sure you abide by it. And if you are a contractor, you're going to make some electric job, gas job, building job, construction work, or any other contract, right? So whatever contract you make, whatever agreement you make, whatever promise you make, you have to keep that promise. Okay? Your word, right, is valuable. तो अपनी जबान की कीमत समझो। एक दफे जबान दे दी खत्म, कस से मस हो जाएगा, लेकिन जबान की खिलाफवर्जी नहीं। सलफ़े सालिहीन, in fact sometimes they didn't even give their word, they just made niyyah and they said okay, that's it, finish, I don't want anything more. Imam Bukhari used to do import export, so he imported some goods and some businessmen came and they said, we've heard that you've brought in some nice clothes from outside, we want to purchase them from you. Okay, here it is. And they said, we'll offer you 5,000. Imam Bukhari said, I'll think about it. He didn't even give his word. He said, I'll think about it. They left. Then some other people came and they said, we want to buy this stock from you. We'll give you 10,000. And Imam Bukhari said, I want this sold it. How will you sold it? Someone came, they offered me 5,000 again. So we give you 10,000. No. I didn't promise them, but I made niyyat in my heart that there's enough profit in that 5,000 for me. I'm not going to go against my niyyat. Okay, उनको ही बुलाया 5,000 में दे दिया। आज हम लोग तो छोटी सी मामूली कीमत पे अपना सौदा कैंसिल कर देते हैं। मकान है, अब किसी ने खरीदा है, आपको पता चला तो आप जाते हैं मुझे give you 1,000 more, तो वो भी कहता है अच्छा ठीक है, उसको I don't want to sell और इसको दे देते हैं 1,000 पाउंड ज्यादा मिल रहे इसके लिए। तो व्हाट अबाउट योर साइन भी हो गई थी, अभी सिर्फ कीज देनी थी लेकिन कैंसिल कर दिया और दूसरे को दे दी 1,000 2,000। ऐसा नहीं, but if you make a promise, you have to keep that promise. This is an ingredient for success. First part, if you have these qualities in you, then what did Allah say? أولئك هم الوارثون. ये वारिस हैं, الذين يرثون الفردوس. जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनेंगे. They will inherit जन्नतुल फिरदौस. Paradise is there for them when they have these qualities. जन्नतुल फिरदौस, हाय हजरत नबी करीम इज़ा सअलतुमुल्लाह फस्अलुहुल फिरदौस फइन्नहु अअलल जन्नह व औसतुल जन्नह व फौक़हु अर्शुर रहमान. When you make dua, ask Allah for Jannatul Firdaus, because it is the highest Jannah, it is the best Jannah, and above it is the Arsh of Rahman. And the more you are closer to the Arsh, the more beautiful. So the Jannah which is closest to Arsh is the most splendid, the most beautiful Jannah. May Allah give us all Jannah. You have to bring these 10 qualities. Again, successful are those who have perfect Iman, complete Iman, proper Iman. Number 2, who have khushu in their salah. Number 3, who turn away from lahwiyat, unnecessary, futile, waste of time. Awalladina hum lizzakati fa'ilun. Number 4, who calculate their zakat properly and spend generously in the path of Allah. And number 5, they protect their private parts. They don't do any silly stuff. They don't watch silly stuff. They don't listen to silly songs. They don't listen to filthy things. They stay away from whatever is dirty and filthy. And number 6, they
are mindful about their amanat and trust. And number 7, they are mindful about their agreements and contracts and their promises. And in the other ayat of Surah Al-Ma'arij, Allah also says, وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. If they are bearing some testimony, they are a witness in a case, then they testify properly. They don't twist their testimony. लोग झूठ बोलते हैं ना गवाही में झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, तो झूठी गवाही तो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है. So don't give false testimony, don't fabricate any testimony and any gawahi and shahadat. Be straight in your shahadat, in your witness statement. This is another quality which is mentioned. May Allah give me these qualities. At the end, again, sorry, I forgot the last thing. What did Allah say? وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. In the beginning was salatihim khashi'un, at the end as well salawatihim yuhafizun. This shows the importance of salat. And this shows that if you are mindful of your salat will help you to practice on those things which are mentioned in the middle. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Salat stops you from indecencies and sinning and disobediences. So be mindful of your salat. Pray your salat with khushu, khuzur, humility, humbleness, complete concentration, and be mindful and guard your salah. Pray faraiz, pray sunnats, pray nawafil, pray tahajjud, pray ishraq, pray chash, pray awabin. Have a show of salat in your heart and mind. When you have free time, do wudu, spread musalla in your home, stand on the musalla, pray a few rakats nawafil. This is having love for salah. Nabi Pak used to love salah. He used to pray lots of nawafil in his home. He used to say, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. The coolness of my eyes is in salah. He used to pray long salah at night. He used to stand for hours in front of Allah. He used to cry and sob like a baby in front of Allah when reading Quran Sharif in tahajjud at night. We have to get this quality within us. Then we will be successful. Then we will be inheritors of Jannah. May Allah give us all. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد كله بيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله لا نحصي عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي نبي الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافل. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحمه وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا انا لما انزلت الينا من خير. اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر واجبر واحفظ واهدي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا وأولادنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المضطهدين المظلومين في فلسطين وفي بيت المقدس وفي غزة وفي جميع أنحاء العالم يا رب العالمين.
اللهم انزل النصر والصبر والسكينة على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ومساجدهم ومراكزهم ومستشفياتهم وشيوخهم وشبانهم ونساءهم وصبيانهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من جميع الجهات، اللهم احفظهم من الزلازل والقنابل والبلابل يا رب العالمين والهدم والتدمير يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احفظنا وجميع المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم استرنا فإنك خير الساترين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم امكر لنا فإنك خير الماكرين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالغاشمين الظالمين الباغين الطاغين المتعنتين المتشددين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وأوقد فيما بينهم الحروب التي لا تنقطع أبدا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم या रहमान रहीम। महज अपने फजल व करम से हम सब की मगफिरत फरमा दीजिए, हम में से किसी एक को भी यहाँ से महरूम न उठने दीजिए। अल्लाह जो कुछ कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाइए, हमारी नमाजों में खुशू पैदा फरमाइए, हमें लग़वियात से मुंह फेर लेने की तौफीक अता फरमाइए, हमें ज़कात सही अदा करने की तौफीक अता फरमाइए, शर्मगाह की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाइए, अमानतदारी नसीब फरमाइए, अपने मुआहदे और अग्रीमेंट को पूरा करने की तौफीक अता फरमाइए, नमाजों की पाबंदी अता फरमाइए। या अल्लाह जन्नत की मीरास नसीब फरमाइए, हम सब को नसीब फरमाइए, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत करके पूरी उम्मत पर रहम फरमाइए, ख़ास तौर पर हमारे गज़्ज़ा और बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा के मुसलमानों पर रहम फरमाइए, फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाइए, वहाँ के मुसलमानों में जो शहीद हो गए या अल्लाह उन पर रहम फरमाइए। अल्लाहुम्मा अरहम शुहदाअहुम वश्फ़ि जरहाहुम वआफ़ि मुब्तलाहुम वकुन लहुम मुईनन व ज़हीरन या रब्बल आलमीन। जो बेचारे शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद फरमाइए, जो भूखे प्यासे हैं उनको दाना पानी नसीब फरमाइए, जो ज़ख्मी हैं उनके लिए इलाज मुआलजा के असबाब नसीब फरमाइए, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाइए, जो महज रब्बुनल्लाह कहने की वजह से अपने घरों से निकाल दिए गए हैं या अल्लाह उन बेचारों पर रहम फरमाइए, उनको अच्छा ठिकाना और शेल्टर नसीब फरमाइए। या अल्लाह हॉस्पिटलों की हिफाजत फरमाइए, हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर बेचारे अपनी जान पर जोखिम लगा के खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमत कबूल फरमाइए, नर्सों की खिदमत कबूल फरमाइए, बीमारों पर रहम फरमाइए। या अल्लाह ज़ालिमों के हक़ में हिदायत है तो नसीब फरमा दीजिए, अगर हिदायत उनकी किस्मत में नहीं है तो एक एक ज़ालिम बदमाश गुंडे लुच्चे लफंगे को चुन चुन कर ख़त्म फरमाइए। या अल्लाह आपस में उनकी मिली भगत ख़त्म फरमाइए। या अल्लाह खबीसों पर ज़ालिमों पर अपना कहर और गज़ब नाजिल फरमाइए और उनके शर से हमारे मुसलमान भाइयों की बहनों की मासूम छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत फरमाइए और पूरी दुनिया में अमन और अमान चैन और सुकून कायम फरमाइए। हमारे इस मुल्क में भी अमन और अमान चैन सुकून कायम फरमाइए, हमारे हुक्मरानों को कुछ अक्ल सलीम अता फरमाइए, रहम दिली उनमें पैदा फरमाइए, इंसाफ पसंदी अता फरमाइए। या अल्लाह पूरे हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमाइए, पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमाइए। अल्लाह हमारे इस मजमे में दुनिया भर में जो बीमार है सबको शिफा अता फरमाइए। अल्लाह मखरूजीन को कर्ज से छुटकारा अता फरमाइए, किसी का कोई मसला है उसको हल फरमाइए, हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल फरमाइए, इस मस्जिद की हिफाजत फरमाइए, इसके बनाने वालों की हिफाजत फरमाइए, मुफ्ती अहमद साहब मौलवी अब्दुल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाइए। ये दोस्त अहबाब बड़ी मोहब्बत से इतनी देर से बैठे हैं, या अल्लाह इनका बैठना कबूल फरमाइए, या अल्लाह इनके बच्चों में भी दीन ईमान की बका के फैसले फरमाइए और या अल्लाह तकवा परहेज़गारी सबको नसीब फरमाइए, हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल फरमाइए। अल्लाह हमारी जितनी भी पर्सनल हाजतें और ज़रूरतें हैं उनको अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन।